welcome. You're watching 6 Stories at 6 with me, Tanisha Avasthi. We have a power-packed show lineup for you today. First up, it's a race against time in Telangana for the 8 workers who have been trapped inside the tunnel for over 24 hours now in Maharashtra. The language debate has been reignited and the border row with Karnataka has been flared up yet again. Meanwhile, 60 crore people have taken a dip in Mahakumbh and the Prime Minister has given a very sharp retort to the anti-Sanatan lobby. In the national capital, there are fireworks expected in the assembly session, which is all set to begin from tomorrow. The fifth story is about the global storm on Indian sellouts, with Trump issuing a 5th warning in 5 days. And finally, we will get you Meloni's sharp takedown of the global left extremist. So these are the 6 stories that we have for you on this edition. Starting first up with the top focus. It's a race against time in Telangana's SLBC tunnel where 8 workers are still trapped, and it's been over 24 hours now. Top rescue agencies have been deployed and a tunnel boring machine is being brought to boost the rescue efforts. Rescuers trying to find their way beyond mangled structure that blocked the entry to the tunnel. Let's tell you about the plan of rescue operation that is currently also underway in Telangana. Now, this is the tunnel, the SLBC tunnel, where the 8 workers have been trapped. This is, remember, for more than 24 hours now. A locomotive train was brought wherein the NDRF team was there. This locomotive train traveled for about 11 kilometers. Now, 11 kilometers after being inside the tunnel is where they faced the hurdle, is when there was mud and water and debris that was a hindrance in the rescue operations that are underway. The locomotive train, remember, covers 11 kilometers inside the tunnel. However, there are still 200 meters left. The debris have, remember, blocked the 200 meters, which is causing a hindrance to rescue the 8 workers that have been trapped inside. The water and mud removal before the debris cleaning is an essential work to ensure that the rescue operations are carried out smoothly. That's the main hurdle. Our colleague Aneri is reporting from Ground Zero on the same. Watch this report. We are right now at the Sri Sailam left bank canal, where we see that unfortunate incident at the tunnel where 8 workers have been trapped, and right now we are standing inside the tunnel. Well, we have walked almost 1.5 kilometers inside the tunnel, and this is the very tunnel where you see that goes long inside. And also what we are seeing is that at around 14 kilometers inside the tunnel, the 8 workers are trapped and the rescue operations are underway. Well, the incident had been reported on Saturday morning, where the 8 workers had gone inside for the repair work of the leakage problem that was reported inside the tunnel. And now these 8 workers have been trapped after there was a heavy gush of water that came from the tunnel, and that led to the mud and the roof which fell on these 8 workers, following which now we see that the rescue operations to bring out these 8 workers safely is underway. And also at the same time we see the police department, NDRF teams, SDRF teams, fire department officials, and also the Indian Army has been pressed in operation to work on. It's been over 24 hours now that these workers have been stranded inside the tunnel, and the rescue operations continue. Moving on, violence erupted in Belagavi after a KSRTC bus conductor was attacked for not speaking in Marathi allegedly. Protests and counter-attacks across state lines are fueling the language wars. The language war has exploded once again in volatile border region of Belagavi. Look at these shocking visuals. The man you see on your screen is Mahadev Hukeri. A mob of 20 savagely attacked him inside a KSRTC bus. His crime? He did not speak in Marathi allegedly. Watch how they corner him like a pack of wolves and unleash a brutal assault.
Listen to the victim as he relives the nightmare. टिकट मंगाया, 2 टिकट मैंने दिया और एक टिकट पिछला महीने पूछा वो लड़की को, वो लड़की ने कहा इनको अरे कर्नाटक में वैसा नहीं चलती माँ। बोलने के बाद अरे मराठी में बोलो, मेरे को मराठी नहीं आता, आप कन्नड़ में बोलिए। मैं बोला आप ऐसा हो कि मैं आगे गया, मेरे ऊपर वो उनका गांव आने के बाद मेरे को कन्नड़ सीखने को बोल रहे हैं, ऐसा बोल के। कितने लोग थे सर वो उनका गांव में कम से कम बोला तो बस में तो 6 से 7 जने बस में छेड़ के मेरे को मारा। The police have cracked down, arresting 4 attackers, but the damage is done. The bloody tension spilled over into Chitradurga, where enraged pro-Kannada activists struck back. Their anger turned into action as they targeted a Maharashtra bus. The retaliation was fierce. The protesters, black paint on a face of a Maharashtra bus driver, a direct warning against the Marathi aggression. But the crackdown was swift. 8 pro-Kannada activists were arrested as law enforcers moved in hard. Karnataka Minister H.C. Mahadevappa also reacted to the border and language wars by appealing for peace. It is ದುರದೃಷ್ಟ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಲು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ಪದೇ ಪದೇ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಕಾನೂನು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is very unfortunate incident and unnecessarily the law and order situation also getting affected due to this issue. I demand Chief Parmeshwar, Home Minister, to take the law and order matter very seriously, because ultimately people are suffering. Murders are taking place in the daylight, and yesterday MLA's right-hand person has been murdered. If this is the situation in Karnataka and Bangalore city itself, people are really afraid to come out. So government has to take up this issue seriously. The flames of rage reached Maharashtra as well. Uddhav Sena workers stormed the streets, stopping Karnataka buses from plying. Karnataka buses were vandalized, defaced and sent back as tensions hit a boiling point. The result? Bus services between the two states have come to a grinding halt as the violence spirals out of control. Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack on those engaged in dividing people and mock India's religious and cultural traditions. The Prime Minister was in Chhatarpur in Madhya Pradesh to lay the foundation stone of the Bageshwar Dham Medical and Science Research Centre, where he said that it is the agenda of some people to divide the society and break its unity. साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर
हमारे संत संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। I'm being joined by Acharya Raj Mishra on the broadcast. आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक से बात करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज साफ साफ बता दिया है कि जो एंटी हिंदू ताकतें हैं वो फॉरेन पावर से ही इंस्पायर हुई हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये सत्य है। मोदी जी ने जो कुछ कहा है ये वास्तविकता में सत्य है। आप देखिए, अभी संभल की जो घटना हुई थी, संभल पे जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम, जो मस्जिद वास्तविकता क्षमा चाहूंगा, जो वो तथाकथित जो कहा जाता है मस्जिद, संभल की एक्चुअल में वो मंदिर है, वो जो कि उनके अंडर में थी, उनकी धरोहर है, उसमें उनको जब वो गए तो वहां पर उनको पत्थर मारा गया। और पत्थर मारने के बाद कनेक्शन क्या निकल करके आता है कि जिस बंदे ने उस भीड़ को उकसाया था, उस बंदे का कनेक्शन बाकायदा सऊदी और दुबई, उसके मतलब जो वहां के गैंगस्टर है, दाऊद इत्यादि के साथ है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये लोग यहां के उससे नहीं है। ये सभी पूरे, मैं अगर देखूं, जो भी भारत विरोधी कंट्रीज हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो इनको इस प्रकार करने के लिए तैयार करती हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप जी का आप देख रहे हैं कि दोबारा बीजेपी ना आए, उसके लिए मतलब अमेरिका जैसी सरकार ने, जो भी वहां की एजेंसियां थी, जो भी भारत विरोधी जो लोग थे, सरकार को नहीं कहूंगा, उन्होंने आकर के इस प्रकार का प्रयास किया। आप देखते हैं, आज मोदी जी का मैं स्टेटमेंट आपने सुनाया और मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर के, और सच्चाई है। आप सोचिए, दिग्विजय सिंह का वो मंदिर के अंदर भगवा आतंकवाद की बात किसने किया था? कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने किया था। कुछ दिन पहले मठों के अंतर्गत गुंडे रहते हैं, इस प्रकार का शब्द आपने अखिलेश यादव के मुख से सुना था। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, मृत्यु कुंभ की बात की गई थी। कुछ दिन पहले आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना होगा कि क्या कुंभ में स्नान करने से अर्थव्यवस्था होगी, क्या रोजगार मिलेगा, क्या नौकरी मिलेगी। अगर इस प्रकार का, उससे कुछ दिन पहले अगर चले जाएंगे आप, तो उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग जो कि सनातन को डेंगू और मलेरिया कहने का प्रयास करते हैं, तो ये सब लोग बाकायदा विदेशी परंपरा को भारत में लाने का, क्रिश्चियनिटी को यहां पर बढ़ाने का या मुस्लिज्म को यहां पर बढ़ाने का, और विदेशी ताकतों के भरोसे होकर के भारत के सनातन संस्कृति को नष्ट करने का हमेशा प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। अब ये ज्यादा बढ़ रहे हैं। बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इतना सनातनी कुंभ के अंदर इकट्ठा कैसे हो गया, इनके पेट में जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो ये हो रही है कि भाई सनातनी इकट्ठा कैसे हो रहा है, सनातनी एकत्रित कैसे हो रहा है। इनको तो भारत से सनातन को नष्ट करना था। भाग्य था कि एक प्राइम मिनिस्टर भारत के अंदर आया जो सनातन को मानने वाला प्राइम मिनिस्टर था। और इनका दुर्भाग्य ये रहा कि जो लोग सनातन विरोधी थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। वो श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है सुंदर कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। सनातन का विरोधी धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। राम से जो व्यक्ति विमुख होता है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। और वही आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो लोग, भारत का सौभाग्य है कि सनातनी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आया, और इनका दुर्भाग्य था कि ये सनातन का विरोध करते करते धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो विदेशी जो सनातन विरोधी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, वो सरकार को भी हटाने के लिए अपना प्रयास किया उन्होंने, बिल्कुल आचार्य जी, नष्ट करने का प्रयास किया। जी बिल्कुल, यही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज फिर से अपने साफ शब्दों में बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है दैट हिंदू यूनिटी इन दीज टाइम्स इज ऑफ umpteen importance to fight the foreign powers. Acharya ji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक से बात करने के लिए। Meanwhile, moving on to the other stories that we are tracking, the Bharatiya Janata Party
plans to present the CAG report in the Delhi Assembly on February 25th, which allegedly reveals corruption by former ruling Aam Aadmi Party. Now, with the commencement of the Delhi Assembly session tomorrow, there are fireworks that is expected. ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। United States President Donald Trump today launched a fresh criticism on the United States Agency for International Development, allegedly for granting funds to interfere in Indian elections process. President Trump questioned on why the US was providing aid to India, alleging that country already benefits from high tariff imposed on American goods. $29 million goes to strengthen the political landscape and help them out so that they can vote for a radical left communist in Bangladesh. You had to see who they supported. You wouldn't believe, yeah, you would believe it. Nobody in this room would be in that group. $20 million for fiscal federalism and $19 million for biodiversity in Nepal. $47 million for improving learning outcomes in Asia. $18 million for helping India with its elections. Why the hell? Why don't we just go to all paper ballots? Let them help us with their elections, right? Voter ID. Wouldn't that be nice? We're giving money to India for elections. They don't need money. They take advantage of us pretty good. One of the highest tariff nations in the world. We try and sell something, they have a 200% tariff, and then we're giving them a lot of money to help them with their election. Italian Prime Minister Giorgia Meloni today took a bold stand against the left extremists. She also gave a shout out to Prime Minister Modi and Donald Trump. Here's all that she had to say. Italian Prime Minister Giorgia Meloni went full throttle, launching a relentless assault on the global left. With a nod to Donald Trump and Prime Minister Modi, Meloni warned that the surge of the right-wing titans has left the left wing trembling in fear. When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. Meloni fired on all cylinders, asserting that the people continue to rally behind leaders like PM Modi despite the ceaseless mudslinging by the leftist elites. She leveled a scathing rebuke at the double standards, declaring that the era of leftist lies is dead and gone. When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. Meloni's blistering critique of the global left struck a chord with Donald Trump. At the CPAC, Trump reminded the nation that the United States is being manipulated by a sinister cadre of radical left forces. The fraudsters, liars, cheaters, globalists, and deep state bureaucrats are being sent packing. The illegal alien criminals are being sent home. We're draining the swamp and we're restoring government by the people, for the people. For years, Washington was controlled by a sinister group of radical left Marxists, warmongers. As the debate over ideology and leadership intensifies, one thing is certain: the political landscape is shifting worldwide.
And that's all that we could pack in this edition of 6 Stories at 6. We'll be back tomorrow, same time, with more agenda-setting news. Don't go anywhere. Coming up next is Live and Breaking.